Hello everyone, welcome to Chemotropy Learning. So we have started with the fundamentals of organic chemistry, in which we have started with the first topic, that was electronic displacement, in which we have studied about the inductive effect, electromagnetic effect and the resonance effect. So if you haven't seen my last videos in which I have explained these effects, just go through them and make your basics clear. Okay. In this video, I am going to talk about the hyperconjugation effect, which is also known as no bond resonance effect or Baker-Nathan effect. The hyperconjugation effect is basically the delocalization of the sigma electrons through sigma pi and sigma p overlapping. Okay. So the main difference in resonance and hyperconjugation is कि रेजोनेंस में आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है और हाइपरकॉन्जुगेशन में आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है. सो ये डीलोकलाइजेशन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का दो तरीक़ों से हो सकता है, सिग्मा पाई एंड सिग्मा पी ओवरलैपिंग, जो कि मैं आपको लेक्चर में आगे बताऊंगी कि कैसे होता है थ्रू एग्जाम्पल. ओके, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव गिवन वॉज द प्रोपीन. ठीक है, propene is the example of sigma pi overlapping. Okay, in this is the structure. ठीक है, जिसमें आपको ये दिख रहा है कि CH बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है एंड दिस इज डबल बॉन्ड. सो द p ऑर्बिटल विच इज इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द डबल बॉन्ड विद दिस कार्बन, दैट p ऑर्बिटल विल ओवरलैप विद द sigma bonding p orbital of this carbon. Okay, that is sigma p overlapping. Okay, so here I have given the contributing structures. आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टूवर्ड्स द कार्बन एंड दिस सिग्मा बॉन्ड विल मूव शिफ्टेड टूवर्ड्स द between these two carbons forming the new double bond. Okay, and there is no bond exist between the carbon and the hydrogen. That's why the hyperconjugation effect is also known as no bond resonance. Okay, and you know that the number of contributing structures will be more, the more stable will be the compound. Okay, this is used for comparing two compounds which is more stable. Okay, so these all effects are used for that purpose, to account the stability of the compounds or to compare the stability of the compounds. Okay, so what are the major requirements for the hyperconjugation? The first is that compound should have sp2 hybridized carbons such as alkene, arene or carbocation or free radicals. इन सभी में ही आपको हाइपरकॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा. एंड द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज दैट अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन. ठीक है, जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल एडजेसेंट वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा. सो अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड and it should at least having one alpha hydrogen. Okay, so we can say that two requirements are very much important for having the hyperconjugation effect in a compound. So you can see over here the example I have given was, this is sp2 carbon. So first requirement is get fulfilled. और आप देख सकते हैं कि इसके एडजेसेंट में दिस इज दी अल्फा कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, एंड इट इज हैविंग 1 2 3 alpha hydrogen attached to it. Okay, so both the requirements get fulfilled. So here we can observe hyperconjugation effect in the propene. Okay, so now there are three types of hyperconjugation. The first is sigma pi conjugation, वही हुआ sigma pi overlapping. ठीक है, तो ये आपको बेसिकली कॉन्जुगेट या एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा, जहाँ पर जैसे कि एल्कीन हो गया, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे. ठीक है, इनमें आपको देखने को मिलेगा. तो आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल. ठीक है, हेयर इन दिस इज प्रोपीन ओनली. ठीक है, सो प्रोपीन में आप यहाँ देख सकते हैं इन एट अल्फा कार्बन इट इज़ हैविंग 3 अल्फा हाइड्रोजन. ओके, this is sp2 carbon, this is sp3 carbon and it is having alpha carbon sp3 hybridized है और उसके पास 3 alpha hydrogen है. fulfilled the requirements of hyperconjugation. सेकेंड में आओगे तो फिर आप देखोगे कि अल्फा कार्बन जो है वो डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है. ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अल्फा कार्बन के पास सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है. ओके,
और अगर आप यहाँ थर्ड उसमें देखेंगे तो आपके अल्फा कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय 3 मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपका कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो थर्ड वन है that will not show hyperconjugation effect because it is not fulfilling the requirement. ओके, सो अब अगर आप देखें ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप ये प्रोपीन ही है, तो प्रोपीन के आपने देखे थे ऊपर एग्जाम्पल में कि कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, 1 2 3 एंड 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, ओके। और इसमें सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका एक और बनेगा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। सो फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एक फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, जो कि होगा जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में होंगे उसके +1 कर दो तो आपको नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। सो it means that number of resonating structure of a compound will be 1 more than the alpha hydrogen present in the compound. Okay, this was about the sigma pi conjugation, and why we are saying sigma pi overlapping, because there is a conjugation between the or delocalization of sigma electrons is between the sigma bond and the p orbital, which is involved in the pi bond formation. Okay, that's why we are saying that it is sigma pi overlapping. Okay, now the second type is conjugation between sigma and vacant p orbital, which generally occur in alkyl carbocation. So I have given the example of 1 degree carbocation and 3 degree carbocation. In 1 degree carbocation, the alpha carbon is having 3 alpha hydrogen. So we will be having resonating structures 3 + 1, which is equals to 4 resonating structure or contributing structure for this carbocation. Okay, and in 3 degree carbocation it is substituted by 3 methyl groups. Okay, so each alpha carbon is having 3 alpha hydrogen, means total number of alpha hydrogen will be 9. So 9 + 1, 10 will be the resonating structures for this carbocation, and more will be the alpha hydrogen, more will be the resonating structure, and more stable is the compound. Okay, so that's why the 3 degree carbocation is more stable than the 1 degree carbocation or 2 degree carbocation. Okay, so the third type of hyperconjugation is conjugation between the sigma and the incomplete p orbital, or you can say p orbital having odd number of electrons. So basically this type of conjugation occur in alkyl free radicals. Okay, here 1 degree alkyl free radical is there, and this is 2 degree free radical. So in this the alpha carbon is having 3 alpha hydrogen, and in this having the 2 alpha carbons, each having 3 alpha hydrogen, that means 6 alpha hydrogen. So 3 alpha hydrogen are here, it means 4 resonating structures will be formed, or here 6 alpha hydrogen are there, so it means there will be 7 resonating structures or contributing structure for this 2 degree free radical. So more will be the resonating structure, more stable will be the compound. So in between these two, this free radical is more stable. So what we can conclude from hyperconjugation is that more will be the number of alpha hydrogen, more will be the resonating structures, and more stable is the compound. Stable is the compound. So basically the main point is that hyperconjugation accounts for the stability of carbocation, free radical. These are the application of the hyperconjugation. And